I think you will see my screen now. Yeah, can all of you see the screen now? Yes, sir. Yeah. So basically in physical chemistry, you will see that there is a very low portions in which you have 0 marks, right? So almost all of the chapters, they are important. Okay, all the chapters are important. You can expect at least 1 to 2 questions from each and every chapter. Now, let's start with some basic concepts of chemistry that we will be doing today. And the next class also will be for, at least my next class will be for mole concept only. Mole concept comprises everything from some basic concepts of chemistry, and concentration terms also will be included in some basic concepts of chemistry. Okay. Now, in this case, you can see that there is 2, 1, 2, 1, 2, 1. So average, you can say 1 or 2 questions will be there from some basic concepts of chemistry. Similar is the pattern for structure of atom, states of matter, thermodynamics. Okay, all of them have 2, 1, 2. Now, equilibrium, sometimes it asks 3, 3, 2, 2, and 2. So you'll either get 3 or 2 questions from equilibrium. And then you have redox reaction. Here also you have all of them have 1 or 2 questions. So you can expect at least 1 question. Now, some questions from redox reaction, they can be asked in terms of some basic concepts of chemistry or some basic concepts of chemistry को redox reaction वाले chapter में भी रख सकते हैं. Okay, so they are interchangeable. Some of the questions. Similarly, in solid state, you have not learned solid state in 12th standard. So solid state because of time लगेगा, but still you are getting 1 to 2 questions each year on solid state also. Now, electrochemistry is big here. Electrochemistry, this one is an exception. The rule is 3 or 2 questions, right? So you'll have at least 2 or 3 questions from electrochemistry also. Then you have surface chemistry. Sometimes it has got 0, like here, but usually you can see one question from surface chemistry. That doesn't mean that you have to leave the surface chemistry chapter. Surface chemistry is a small chapter, and it is a chapter that you can do on your own. Okay, so एक दिन लेके बैठे NCERT only, and then you will be completed. Okay, NCERT, and then it will be completed. Now, solution has been a bit unusual. In 2018 and in the last year, they have asked 0 questions from solution chapter. This is a bit unusual. But again, in solutions, you have something like qualitative property they have not asked, that is fine. But concentration terms and everything will be there in the other chapters also. For example, if you don't know what is concentration term, then you cannot do questions on electrochemistry also. You cannot do questions on equilibrium also. Sometimes you cannot do questions on sometimes thermodynamics also. Okay. Similarly, for chemical kinetics also you cannot do. Chemical kinetics, if you see here, chemical kinetics is also important. It has how many questions each year? 2 questions each year. And chemical kinetics is very easy. In NEET, they have only asked with regards to first order reactions or anything from Arrhenius equations. Okay, they have not gone here and there. They have just asked about 2 topics: first order or Arrhenius equation. First order or Arrhenius equation. Any numericals from first order or Arrhenius equation. Okay, so this is about physical chemistry. If you move on to inorganic chemistry, then in inorganic chemistry also, if you see these things now, that is, there are 0 questions from classification of element and periodicity, 0 questions here, then it does not mean that it is completely 0. Maybe some of the questions in chemical bonding has been characterized as, some of the question from periodicity has been characterized as chemical bonding. उसमें chemical bonding का कुछ concept आ गया. So they have characterized it as chemical bonding. ठीक है? So all the chapters are important except for that matter, salt analysis. Okay, so salt analysis, you can see that consecutively, successively in each year, they have asked 0 questions, and you can expect that they will ask 0 questions. So you can remove this part, salt analysis only. Rest of the chapters are equally important. You can see at least 1 question or 2 questions. Now, chemical bonding is very important. Now, sometimes what happens, chemical bonding and molecular structure, their question can also be asked in P block elements. Now, if you have some P block elements, for example, S3PO4, and their structure has been asked, then it will come under P block or chemical bonding. That is a question. But again, chemical bonding, P block, some questions are interchangeable. And again, these topics are very important. Each year they have asked from chemical bonding, hydrogen, S block. Hydrogen, they have asked 1 or 2 questions, but S block, if you see, they have asked 2 questions every year. 2 questions every year from S block. Now, P block A and P block B. This is P block A, that means this is 11th standard. P block B, that means this is 12th standard portion. Now, from 12th standard portion, they have asked maximum questions. You can expect at least 2 to 3 questions from P block elements. Similarly, in D block element, this D block elements and coordination compounds. Both of these chapters are interrelated. And if you talk about D block elements, then there are 2 compounds, KMNO4 and K2Cr2O7. Okay?
These are the two compounds, and then electronic configuration of the F block elements. Okay, so these are the important topics in D and F block. Now, all the rest of the things, they can be covered also in coordination compounds. In coordination compounds, you will have different topics such as isomerism, IUPAC nomenclature, and also bonding theories, VBT, MOT, and everything. Now, metallurgy, they have asked one question. Since you have not done metallurgy in 12th standard, you just need to read NCERT, and the question will be directly from there only. Okay, NCERT, and the question will be directly from there only. So this is about inorganic chemistry. Now let's move on to organic chemistry. In organic chemistry, you have some basic concepts. In this, you will have GOC, IUPAC, isomerism, and all of these topics will be there in organic chemistry, some basic concepts. Now, if you see here 0, that does not mean you don't have to learn organic chemistry. You have to koi bhi sabal organic chemistry se aaya hi nahi tha, some basic concepts. It is just that these questions must have been having some portions, or they have been multi-conceptual, and they have some concepts about hydrocarbons. Then that is why you are seeing 4 marks here for hydrocarbons. Okay, so organic chemistry, this is very important. This is from 11th standard, GOC, IUPAC, and isomerism. This is very important. Now, if you see haloalkane, halorine, now you must know from these chapters, haloalkane, halorine, alcohol, phenols, ether, aldehyde, ketones, carboxylic acid, amines. All of these chapters are what? Agar kisi ka method of preparation hai, that means in the next chapter it is as the chemical properties. So all of these chapters are interrelated. It does not mean that here they have asked 0 question about haloalkane, halorine. Haloalkane, halorine has not been mentioned at all. There must be something regarding alcohols which has been characterized as, which has not been characterized as haloalkane, halorine. Okay, so all of these chapters are important, and you can see 1 or 2 marks from these 2 chapters. Now, alcohol, phenols, and ethers, they have repeatedly asked 2 questions or 3 questions. So this is important. And aldehyde, ketones, and carboxylic acid, this is important. Now, in organic chemistry, generally speaking, all the name reactions are important. All the name reactions are important. Now, we will do some name reactions other than NCERT also when you come to organic chemistry. Now, last 3 chapters, polymers, environmental chemistry, and chemistry in everyday life, you need to learn only NCERT. Okay, you need to do only NCERT. Now, here you have biomolecules. Biomolecules, there are some things which are other than NCERT you have to learn, that we will teach. But basically, this is also NCERT. And they will ask very basic questions from biomolecules, like what is the vitamin, the deficiency of this vitamin causes what diseases. Okay, so very basic questions they will ask from biomolecules. They will not ask very high level topics such as isolectinic points and so on. Okay, so you have to just focus on what you have done till now and maximize the marks upon that. कुछ ज़्यादा नया पढ़ के आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिए. And your strategy should be, you have physics, you have chemistry, and you have bio. Okay, so give each of them 2 to 3 hours. 2 to 3 hours, and bio also 2 to 3 hours. Okay, now you have 3 things to do. You will complete you must have some theory with you. Okay, first is theory, then you have previous year questions, and thirdly, what I will show you today also, you have to do NCERT exemplar. You have to do NCERT exemplar. Why? Because most of the PYQs, you can see that they are similar to NCERT exemplar questions. Now, in NCERT exemplars, you don't need to do all the questions. What you need to do is only, just a second. You need to do MCQs. Okay, multiple choice question in which only one is correct. You need to do assertion and reasons questions. And thirdly, you can do match the following. And thirdly, you can do match the following. Okay, now this schedule should be for the day. Okay, now before sleeping, you should at least revise all of these physics, chemistry, and what you have done, what you will do the next day, and it will take hardly 2 hours to complete all the subjects. Okay, so you just need to do topic dekha aapne. For example, let us suppose you did mole concept today. So you will think about you will think on your own. Okay, mole concept, number of moles ka formula kya hota hai. Okay, if gas is there, then what is the condition? What
22.4 लीटर्स होता है। इफ एवोगाड्रोस नंबर का कांस्टेंट क्या होता है? देन वी डिड कंसंट्रेशन टर्म में molarity, what is the difference between molarity, which is temperature independent, which is temperature dependent? You will think about it, okay? And you must set some target जहाँ पे आप इसको करें, and then you will also prepare for the next day. ठीक है? Prepare for the next day. It will hardly take 2 hours. I will say 1.5 hours to 2 hours. ठीक है? 1.5 से 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम आपको कल का प्लान करने में, और आज क्या किया उसको थोड़ा सा एक बार दोहरा लेने में। ठीक है? एंड इफ यू आर डूइंग थ्योरी, फर्स्ट थिंग इज दैट आई विल नॉट सजेस्ट टू स्टार्ट डूइंग कंप्लीट थ्योरी। आप सीधा जाइए पीवाईक्यू पे, फिर आप सीधा जाइए पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर पे, उसके बाद इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन देन यू गो बैक टू द थ्योरी। ओके, इफ यू हैव थ्योरी समवट डन फॉर सम चैप्टर्स, ओके, फॉर एग्जांपल 12th स्टैंडर्ड अभी खत्म हुआ है, तो फॉर ऑल द 12th स्टैंडर्ड टॉपिक्स व्हाट यू शुड डू, यू शुड बी जस्ट डूइंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, एंड इफ यू गेट स्टक समवेयर देन यू विल गो टू द थ्योरी। ओके, दैट what you should do for 12th standard. If there is some chapter that you have not studied, for example, solid state. Okay, so if you have not studied solid state, then just wait for a while. Solid state हम लोग कराएंगे, उसके बाद I will give you notes, formula based questions आते हैं density वगैरह पे, बहुत ही आसानी से वो सारे हो जाएंगे. Okay, for example, if you have not done, let us suppose polymers and all. So polymers के लिए थोड़ी सी theory NCERT को पढ़ लिया आपने, उसका PYQ और NCERT exemplar लगा लिया बस. Okay. So what you should do, you have to maximize on what you have done till. Okay, अभी जो बीच का टाइम है इसमें मैक्सिमाइज करने का है, जो भी आपने अभी तक किया हुआ है, जो भी पढ़ा हुआ है उसी को मैक्सिमाइज करना, कुछ ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत अभी नहीं। ओके, चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेस क्लास। तो स्टार्ट विथ मोल कंसेप्ट, एंड मोल कंसेप्ट में सवाल से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे प्लीज आप लोग, मोलारिटी, व्हाट इज द यूनिट? मोल कंसेप्ट, yes, you can answer in chat, you can answer in chat, what is the unit of molarity? I will wait for 2-3 answers, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग मूव कर जाएंगे, है ना, आंसर बता के। What is the unit of molarity? Molarity solution chapter में तो पढ़ा था, concentration terms में 12th standard ही याद होना चाहिए। Yes, Alan correct, yes, Hanifa correct, yes, Saif correct, है ना। तो 1 का क्या है? 1 का है नो मैमुना मोल्स पर लीटर होगा ना, मोलारिटी का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन? यस करेक्ट एलन, नो हनीफा, ध्यान दीजिए, सोचिए जरा, मोल फ्रैक्शन। ओके, अक्सा इज न्यू हियर। हेलो, हाय अक्सा, हाउ आर यू? से बात नहीं हो पाई। I am fine. फाइन, अच्छा, इज दिस योर फर्स्ट टाइम एट लर्निवियो? Yes. अच्छा, 12th स्टैंडर्ड आपने कहीं से किया था, ओके फाइन। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Saudi Arabia. You're from Saudi Arabia, you're at Saudi Arabia? I'm at Saudi Arabia. You're from India. Kerala. अच्छा, where in Kerala? Okay, fine. How was your chemistry exam, boards examination? It was okay. It was okay. Okay, fine. Okay, yes, Saf correct, Alan correct. Mole fraction does not have any unit. What is mole fraction? Mole fraction is, for example, if I want to calculate mole fraction of solute, then it will be moles of solute upon total number of moles in solution. Solute or solvent दोनों को मिला के जो total number of moles होगा वो. So here also we will have mole, and here also we will have the unit mole. So mole and mole will cancel, and that is why mole fraction is unitless. So answer will be D. मैमुना, हनीफा, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? Yes, sir. Yes. अगला बताइए, अगला बताइए, अगला मोल की यूनिट क्या होगी? What will be the unit of mole? Yes, Saif correct. Yes, Alan correct, very good. What will be the unit of mole?
ओ, बाकी लोग भूल गए। मोल की यूनिट, हाँ ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को। यस हनीफा, करेक्ट, यस। सो मोल की यूनिट इज मोल। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल? यूनिट ऑफ मोल इज मोल। मोलालिटी, 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 स्मॉल m। एलन, यस करेक्ट। मैमूना करेक्ट, सैफ करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिस इज मोल्स पर केजी, जी हो जाएगा। वेरी गुड अक्सा, वेरी गुड हनीफा। प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा? देर आर टू। आपने कहा, हाँ ठीक है, एक तो सही है। देर इज वन मोर। हाँ चलिए, एलन ने एक कह दिया और सैफ ने एक कह दिया। करेक्ट। सी देर इज वन मोर यूनिट ऑफ प्रेशर हियर। ये अक्सा करेक्ट, वेरी गुड। वन मोर, देर इज वन मोर यूनिट। हाँ यस, एलन करेक्ट। एलन ने दोनों आइडेंटिफाई कर लिया। एक तो फिजिक्स वाला है, समझ लीजिए, है ना। एंड आई थिंक बोथ ऑफ देम यू कैन क्लासिफाई, जो ज्यादातर आपका फिजिक्स में यूज होता है। नो 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 सैफ, नो, दैट इज नॉट, वो नहीं है। बोथ ऑफ देम आर मोस्टली यूज्ड इन फिजिक्स ओनली। केमिस्ट्री वाला यहाँ पे प्रेशर का कोई यूनिट नहीं है। बार 18 जनरली यूज होता है, वो नहीं है यहाँ पे। बाकी लोगों को नहीं नजर आ रहा है। मैमुना ने दिया आंसर, मैमुना ने आंसर नहीं दिया ना। मैमुना, हनीफा, व्हाट अबाउट यू गर्ल्स, टेल मी। एक तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर प्रेशर का, एच, एंड देन देयर विल बी वन पास्कल, है ना। एच एंड सी, बोथ ऑफ देम आर व्हाट, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। जी, नेक्स्ट आप बताइए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यस, नाउ दैट इज करेक्ट एलन। ये बहुत सारे लोगों को, हाँ अक्सा करेक्ट, वेरी गुड। हनीफा, वेरी गुड, देव सही पता है। दिस इज एफ, कैंडेला। यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी। ओके, अक्सा करेक्ट। नहीं 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 एलन, गलती हो गई आपसे। डेंसिटी, मास नहीं, डेंसिटी, डेंसिटी। हाँ, नाउ इट इज करेक्ट। डेंसिटी, और किसी ने आंसर किया? ओके, ओनली अक्सा, सैफ एंड एलन हैज आंसर्ड। व्हाट अबाउट अदर्स? मैमुना, हनीफा, प्लीज आंसर। यस हनीफा करेक्ट। मैमुना, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? नहीं आ रहा याद? हाँ मैमुना सही, वेरी गुड। इतना टाइम नहीं लगाना है लेकिन, ठीक है। और लास्ट में बचा आपके पास मास। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? करेक्ट मैमुना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कितने हो गए आपके पास? दिस इज आई। चलिए, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। ना बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स के बारे में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन मोल इज इक्वल टू हाउ मच? एवोगैड्रोस नंबर ना, Na। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na? 6 पॉइंट, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Na? 6.023 into 10 raised to 23. 022 ना, into 10 to the power 23. Okay, 6.022 into 10 to the power 23. Okay, and number of moles is equal to the given mass divided by the molar mass. ठीक है, given mass divided by molar mass. Now both of these definitions are applicable. One mole is equal to 6.022, or you can also write number of moles is equal to the given number of particles
divide by 6.022 into 10 to the power 23. So both of these formula given by mass by molar mass, given number of particle divided by 6.022 into 10 to the power 23, both of these are applicable for solid, liquid and gas. ठीक है, तीनों के लिए applicable है ये number of moles के लिए. Now there is one more thing, that is number of moles is equal to the given volume divided by 22.4. This is only applicable for what? Only for gases. This is only applicable for gases. चलिए उस हिसाब से बताइए. नंबर 1 देखते हैं हम लोग. 88 ग्राम of CO2. Okay, Alan. So first of all, you have to calculate the molar mass of CO2. Tell me what is the molar mass of CO2? How much, Alan? 18. I could not understand. No, 12, 1, 2. 1, 2. किसी को समझ में आ रहा है what is Alan saying? I cannot hear you. Write in chat, what is the molar mass of CO2? I'm not asking number of moles. 44. That is correct. So number of moles will be equal to 88 upon 44, that is equal to 2. तो क्या आंसर हो जाएगा आपके पास? This one is B. Here you have been given number of particles, है ना? अब उस हिसाब से लगाइए. Given number of particles divided by number of moles. ये तो जल्दी आंसर कर लीजिए. This one is very easy. 2 का क्या होगा? Yes, Hanifa, correct. Correct है. Yes, Saf, correct. What about others? Mamuna, Aksa, Alan. Second one will be. अच्छा. Aksa, can you please turn your mic on? Yes. Number of moles is equal to, जब particles given हो तो क्या करते हैं? Given number of particles, है ना? Yes. अच्छा, टाइपो तो नहीं है, पहले आप देख लीजिए जरा. आपने जो आंसर किया है. It's right, ना? Okay. So what is the number of particles given? Second वाले में. Yes, Aksa. 6.02 into 10 is 23. 10 to the power 23. Divide by Avogadro's number. What is Avogadro's number? 6.02 into 10 is 23. 23 ना? 1 mole. 25 बोला क्या आपने? 23. 23 ना? So this will be equal to 1 mole. And what did you answer? This will be C. वही हम पूछ रहे थे, टाइपो तो नहीं है. What about this one? Third one. Third का आंसर बताइए बाकी लोग. This is a gas. O2 will be a what? O2 will be gas. When you have liters given, you will see that this is always a gas. अगर गैस नहीं है तो फिर वो डेंसिटी देंगे उसका. It will be a liquid. उसका डेंसिटी देंगे, उससे मास निकालिए, मास निकालने के बाद number of moles. But here they have given 5.6 liters of O2 at STP. So given volume upon 22.4. What will be the answer? Send the answer in chat. Yes, Alan, correct. Very good. No, Mamuna. Aksa, correct. Hanifa, correct. Mamuna, can you tell me how did you calculate? Yes, Mamuna. Number of moles is equal to. बोलिए. Yes, Mamuna.
गिवन वॉल्यूम कितना है? Please solve it. I can't hear you. Okay. Saf, what about you? आपने आंसर नहीं किया. Number of moles? 5.6 liters of O2 at STP. This will be A 0.25 mole. 96 gram of O2. 96 gram of O2. Yes, very good, Alan. Correct. Yes, Aksa, correct. Now, one thing is for sure, I can see that if you don't know the molar masses, then you will have a problem. Yes, Saf, correct. तब आप लोग को time लग जाएगा. So you have to remember the molar masses of the first 30 compound, first 30 elements. In the periodic table, आपको zinc तक याद रहना चाहिए सबकी molar masses. Okay, all the molar masses. Sometimes what you will have, even if you remember till 20, then work will be done. But if you remember till 30, then एक बात बता रहे हैं आपको. There was some question from solid state in which they had asked you to calculate the molar mass or the atomic mass of copper using the density formula. Since you have not learned solid state, तो फिर आप लोगों को नहीं पता होगा density से कैसे निकलता है, but density से निकलता है. Okay, so there is a way by which you can calculate the molar mass of a metal using the density formula of solid state. और उन्होंने copper का पूछा हुआ था. Now, if you remember the molar weight, molar mass of copper, that is 63.5, then you should not even calculate. You should just take 63.5 and that's it. बस हो गया. So if you remember till 30, तो बहुत सारे सवाल आपके पास ऐसे हो सकते हैं that you can answer directly without even calculations, जहाँ पे calculation required हो. Okay, so remember till 30, at least till 30. चलिए. So for this 96 grams of O2, you will have 96 grams divided by what is the molar mass of O2? That is 32. है ना? एक ऑक्सीजन का 16, 16, 16, 32. You will cancel this by 3. So you will get E, and 1 mole of any gas has 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Clear, everyone? Yes or no? Please tell me. I'm just activating your brain. Nothing else. अभी हम लोगों ने start नहीं किया कुछ. Okay? I'm just activating कि हम लोग क्या चीज पढ़ने वाले हैं. So once you have not, if you have not even noted, don't worry. है सब कुछ है आगे. Number of moles अच्छे से लिखा हुआ सब कुछ. ठीक है? Total number of atoms वगैरह सब कुछ है. If you have not noted down, बस आपने ये इतना कर लिया, दिमाग आपका activate हो गया. You know that your brain now knows that you have to deal with moles and everything. Okay. चलिए, now this is a very simple question. इसको थोड़ा सा deal कर लेते हैं. बताइए. Read this question. 2 students performed the same experiment separately, and each one of them recorded 2 readings of mass, which are given below. Correct reading of mass is 3 grams. Correct reading of mass is 3 grams. On the basis of given data, mark the correct option out of the following statements. Here they are asking, there is student A has got a reading of 3.01 and 2.99. Student B का मिला 3.05 and 2.95. ठीक है? अब बताइए. Basically यहाँ पे देखिए, they are asking about accuracy and precision. Precise, accurate. Precise, accurate. Precise and accurate. Is there anyone who can explain me what is the difference between accurate and precise? Accurate और precise में क्या फर्क होता है? So accurate is how close is to the actual value, actual reading, and precise is the number of significant values. Okay. लेकिन measurement में अच्छा ठीक है, चलिए measurement में precise significant values. The number of decimals. नहीं, वो measurement केस में नहीं रहता, वो device केस में कोई device कितना precise है. Okay. So Okay, the least count error then. Sorry. The least count error. हाँ, वो आपका जो precision की बात कर रहे हैं ना, that is for the device. How precise is a particular device? I'll explain accuracy and precision in this example.
This is bullseye. Okay. This is bullseye. एक और यहाँ पे होता है. Okay. Let us suppose there is a person who is hitting here, and my system is not working today. Once here. So obviously this is not accurate. But this is precise. है ना, ये precise तो है, accurate नहीं है लेकिन, right? Because this is far from the actual value. But he is hitting everywhere. Like the proximity of each hit is very near. But if someone is hitting, let us suppose like this. So all the hits are what? These are accurate, but these are not precise. All of you understood this? Yes or no? Tell me. Accuracy and precision. हाँ जी बताएं. नहीं समझ में आया. Let me. Sir, can you repeat it again? जी एक second. I'm saying there is a bullseye here, है ना, and a person is hitting in this area. But all the hits are away from the bullseye, but they are very near to each other. That means this is precise. वो एक ही जगह hit कर रहा है, but it is not hitting accurately. Precise and not accurate. But if someone is hitting like this, 4 hits लिए उन्हें, and they hit here in this area. So all of them are close to the bullseye. They are accurate. They're very accurate in the sense that they are very close to the bullseye. But these are not precise hits. अब समझ में आई बात? Yes or no? Tell me. हाँ जी बताएं. Yes, sir. Okay. Now tell me about this one. This question. देखिए, ए के बारे में हम क्या कह सकते हैं? 3.01 एंड 2.99. ओरिजिनल रीडिंग 3 था. अगर आप एवरेज लीजिएगा तो दिस विल बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी accurate and precise also. सही है? Yes or no? Tell me. But if you see the B part, B में इसका अगर आप एवरेज लीजिएगा तो एवरेज इज कमिंग आउट टू बी 3.0 which is the actual reading. तो ये accurate तो है, but not precise. Okay, so average लेके आप क्या निकाल लीजिएगा? Accuracy निकाल लीजिएगा, and you see the deviations like least value and the largest value में कितना ज्यादा deviation है. जितना ज्यादा deviation उतना कम precision हो जाएगा. So in this case, I can say both results of both students are neither accurate nor precise. No, इसका accurate and precise भी है. Results of student A are both precise and accurate. ये सही option है. Results of student B are neither precise nor accurate. नहीं, accurate तो है but precise नहीं है. This is wrong. This is also wrong. Results of student B are both precise and accurate. नहीं, this is also wrong. So correct option is going to be B. Second one. A का दोनों क्या है? Accurate भी है और precise भी. Accurate तो दोनों का ही है, but A का precise भी है. ओके, चलिए अब थोड़ा सा फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिए. हाउ मेनी ऑफ यू नो द फॉर्मूला? फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सेल्सियस निकालना है. सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9. याद आ रहा है? किसी को नहीं याद आ रहा? F - 32. चलिए कैलकुलेट करके बताइए. Obviously आप लोग को कम से कम you should know this much that 40 degree and 30 degree Celsius will not be there. Why? Because 200 degree Fahrenheit.
100 से ऊपर आ जाता है फीवर तो बहुत ज्यादा आपको गर्मी पता चलने लगती है, राइट? 100 degree Fahrenheit. The thermometer that we use in the Indian subcontinent, we measure the temperature, body temperature in Fahrenheit. So you know what is 100 degree Fahrenheit. 200 degree Fahrenheit उससे double. So obviously we, and 40 degree Celsius, 30 degree Celsius हम लोगों ने झेला हुआ है. So we know that 100 degrees 200 degree Fahrenheit can never be 40 degree or 30 degree, because 200 degree Fahrenheit पे हम लोग we cannot survive at 200 degree Fahrenheit, है ना? तो 40 या 30 तो नहीं होगा. Now these values are very close, तो यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते. You have to calculate. Since both of these are very close to each other, calculate करके बताइए कितना आ रहा है. See, I'm doing all of these things. Why? Because they can ask you these questions also. Last year in 2022, they asked about significant figures. Okay. So significant figures से अगर पूछ सकते हो तो Fahrenheit और डिग्री सेल्सियस से भी पूछ सकते हो. Approximate कर रहे हैं या फिर calculate कर रहे हैं? Don't know. Let us see. Five divided by 9. 200 minus 32. No, it's 93.3. Huh. C is the correct answer. Yes, Saf, correct. Okay, C is the correct answer. Okay, moving on. ये बताइए, which of the following statement about a compound is correct? Okay, Aaron. Hmm. Okay, Aksa. First of all, आप देख लीजिए मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है. See, molecule is when you have bond between any atom. ठीक है, एटम के किसी भी कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एटम्स. So even if you have same atoms, H2 हो जाए, O2 हो जाए, या फिर आपके पास NH3 हो जाए, all of these are molecules. But a compound is combination of different atoms. H2 molecule है लेकिन compound नहीं है, because H2 में एक ही किस्म के atoms है. Compound में you should have different atoms. यहाँ पे you will have NH3, CH4, NaCl, and so on. बताइए अब.
क्या बोला उन्होंने? इनकरेक्ट बोला, इसको भी ध्यान रखिएगा। Incorrect. A molecule of a compound has atoms of different elements. हाँ हो सकता है, right? A molecule of a compound has atoms of different element. ठीक है, तो यहाँ पे different element हो सकता है compound के अंदर, yes हो सकता है. A compound cannot be separated into its constituent elements by physical method of preparation. बिल्कुल सही बात है. नाइट्रोजन NH3 है, physical method say you cannot separate nitrogen and hydrogen. Okay, you have to use some chemical methods. So this is also true. A compound retains the physical properties of its constituent elements. नहीं, ऐसी बात तो नहीं है ना? जैसे इन्होंने बोला है, compound retains the physical properties of constituent elements. अगर आप बात करें सोडियम की और क्लोरीन की, सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज है, उनको थोड़ी ना NaCl सॉल्ट के अंदर it does not have those physical properties. सोडियम आपके पास क्या है? This is the solid, and this is also what? Very soft solid. Chlorine Cl2 is a gas. Chlorine is a gas. NaCl क्या होता है? NaCl is a salt, है ना? नहीं वो इतना soft होता है, so it does not retain. So this 3 is going to be the correct option for this question, because this is an incorrect statement. Okay, now let us move on to number of moles. As we have seen, what is number of moles? It is given mass upon molar mass, or it is also given number divided by 6.022 into 10 to the power 23. You have to note that above is applicable for both solid, liquid, and gas, and all the physical state. कोई भी physical state में है, it is applicable. These formula, the above formulas. Number of moles is also equal to, from the equation PV is equal to nRT. The gases equation PV is equal to nRT. I can write number of moles, that is N is equal to, number of moles is denoted by N. It is equal to PV upon RT. Or it can also be equal to volume of gas at STB divided by 22.4. This is only applicable for the gaseous state. This is only applicable for the gaseous state. Let us suppose, if you want to write this, please write this. I will give you 2 minutes. This is nothing new. You must know all of these things. Write it fast. The next topic is important. The next topic that you are going to learn is important. See, molar mass is important. Okay, molar mass for each and every compound, it is going to change. 6.022 is not going to change. 22.4 for gases is also not going to change. But H2 का निकाल रहे हैं या O2 का निकाल रहे हैं या Cl2 का निकाल रहे हैं, the molar mass is going to change. So you have to learn the molar mass. नहीं पता जाएंगे आप. Okay. Sometimes NTA will give you the molar masses. Sometimes they won't give you the molar masses. Okay, तो उनके भरोसे बैठ के नहीं रहना. चलिए, moving on. Let us suppose I have a compound AX and BY. जैसे you have, let us suppose AlCl3. यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई. So when you have AX BY type of compound, then it will dissociate into X. It will give you X atoms of A with Y positive charge and Y atoms of B with X negative charge. Important things is you will get X A atoms and Y B atoms. Okay, so total number of atoms is going to be X plus Y. Total number of atoms, not a particular atom. Total number of atoms is equal to X plus Y into the number of molecules of AX BY. Now, number of molecules के लिए क्या हो सकता है? Number of molecules के लिए आपको number of molecules directly ना दे. They can give you number of moles. They may also not give you number of moles. What they can give you the mass. They can give you the number of molecules सीधा दे सकते हैं, तो वो केस हो जाएगा. ठीक है, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है. मोल्स में मास दे सकते हैं आपको, और they can also give you what? They can give you the volume of gas. They can also give you the volume of gas. So from mass you will convert to moles. मोल से फिर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे करेंगे? 6.022 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड सिमिलरली फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ गैस यू विल कन्वर्ट टू मोल्स, देन मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AX into BY. Number of atoms of A will be obviously equal to whatever number is present in one molecule multiplied by the total number of molecules of AX BY. Number of B atoms, Y into number of molecules into X BY.
Now, they have asked these questions, A, B, the total number of atoms से related questions they have asked. They have not till asked. अभी तक number of electrons का सवाल नहीं आया. So number of electrons is equal to summation of atomic number into the number of times a particular atom is present in the molecule into the number of molecules of AXBY. Yeah, what is Zi here? Zi is the atomic number of AB. And if you have some other atoms also, just मान लीजिए आपके पास you have let us suppose C2H6, C2H5 and H3. So here you have carbon, hydrogen and nitrogen, 3 elements. तो वहाँ पे atomic number of A, B, C जितने भी elements हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे. Okay. Now Xi is equal to number of atoms of A, number of atoms of B, and so on. In a molecule of AXBY. In a molecule of AXBY. ठीक है. तो for example, इस केस में अगर हम देखें तो ZA into XA plus ZB into XB इन दोनों को ऐड कर लिया into the number of molecules of AXBY. This will be the number of electrons. Since the molecule is neutral, the number of protons will be equal to number of electrons and the same formula will be used. Now, number of neutrons, if they ask you, the number of neutrons will be equal to, first of all, you have to calculate the number of neutrons. For number of neutrons, you have to calculate you should also know the mass number of the atom. So what you are going to do, you're going to subtract the atomic number from the mass number. You will get the number of neutrons in a particular element. You multiply it by X, that is the number of atoms present in one molecule of AXBY, and the same formula is present. Okay, so please write this down, all of these formula. Visible here? Or should I zoom in? Tell me. Is this visible? Yes. Aksa, Alan, everyone. Yeah, please write this down. Most of the questions from mole concept has been asked from these topics only. 2022 में नहीं पूछा था, उससे पहले पूछा गया बहुत बार. 2022 में they had asked about significant figures, and then there is one question that is somewhat related to solid state, जिसको इधर के भी टॉपिक में डाल दिया जाता है. Let me know if you're done.
जी, done everyone? Still writing. Let me know once you're done. By the way, while you guys are writing, इस book का आप screenshot ले लीजिए. Okay. The best thing about this book is that after each question they have also given the NCERT page number जहां से सवाल आया है. I mean, it's not saying that directly from NCERT, लेकिन वो टॉपिक कहाँ पे है या फिर वो कंसेप्ट कहाँ पे है, that is given directly here. I think I can show you some examples. ठीक है, I hope you have taken the screenshot. Just for example, you have this question. So यहाँ पे they have also given NCERT page, this one, and the year in which it has been asked. Okay. So how it will help you? You do the previous year questions from this book, and if you get stuck in certain topics, तो फिर आप NCERT refer करके उस topic को पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से. Okay. And also one more thing that I will suggest is that you start a timer and then do the previous year questions. जब भी आप practice करने के लिए बैठे. Okay. Please do not do that. Okay, fine. You will start reading question number one. Question number one. So the answer is going to be 2. फिर आपने तुरंत पलट के देख लिया पीछे, ओ आंसर -2 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. चल ठीक है, ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसका आंसर लग रहा होगा 4.5. आंसर आपने पीछे देखा 5.4 है. ओ थोड़ा सा मिस हो गया. ओके, सो प्लीज डोंट डू समथिंग लाइक दैट. यू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4. एटलीस्ट डू 30 questions. ठीक है, and you have to have an average of 30 minutes. ठीक है, तो टेक एन एवरेज. एक सवाल 1 मिनट में, एक सवाल आपको करना है. जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपने नहीं किया कोई सवाल तो उसको मत काउंट कीजिए. ठीक है. सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग, फॉर एग्जांपल यू डिड 30 क्वेश्चंस, उसमें से आपने 25 किए हैं, तो 25 के लिए आपको कितना लगना चाहिए? 25 मिनट्स लगने चाहिए. ओके, फिलहाल तो तुक्के का भी आप लोग कुछ भी मत लेके चलिए. 1 मिनट में एक सवाल. आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 180 मिनट्स. हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है, you don't have to do 180 questions in 180 minutes, है ना. फिजिक्स में कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको 5 मिनट भी लग जाएगा, तो वहां के लिए टाइम बचाइए. चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू आर डन. नाउ लेट अस स्टार्ट. अब ये सबसे पहला सवाल आपके एग्जाम्पलर से है. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? पहले कैलकुलेट करके बताइए, उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस इजीली. थोड़ा आसानी से कैसे कर सकते हैं. Greatest number of atoms.
ओके, देखते हैं। सिर्फ मास देख के मत कीजिए, देयर आर टू थिंग्स ना, ऑल ऑफ दे हैव गिवन यू मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो बस ये मत देखिए कि गिवन मास किसका ज्यादा है, अगर गिवन मास भी ज्यादा है, मोलर मास भी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ मोल्स छोटा हो जाएगा। चलिए, आई विल गिव यू वन मोर मिनट। आई एम वेटिंग फॉर अदर पीपल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा। ओके, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, ओनली एलन आंसर एंड एलन्स आंसर इज आल्सो रॉन्ग। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक हिंट आपको यहाँ पे ये है, whenever you get something like this and if you have different types of atoms, start with lightest element. बताइए, which is lightest here? हाँ, Saif correct. Which is lightest here? Aksa correct, very good. हाँ, बहुत सारे लोगों का सही आ रहा है। लाइटेस्ट यहाँ पे आपके पास क्या है? हीलियम है, राइट? तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? हाउ मेनी मोल्स? 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 2 2 क्यों होगा? हीलियम कितने होता है एटॉमिक मास? अरे आप ऐसे मत हमको मत इस तरह कंफ्यूज कीजिए। 4 होता है ना हीलियम का, एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। हाँ ठीक है, 4 डिवाइड बाई 4, बस वो हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है तो उसका 1 होता है। ओके, हीलियम इज गोइंग टू बी, दिस इज 1 मोल। 46 अपॉन सोडियम का, सोडियम का कितना? 23, दिस इज 2 मोल। ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत कम ही मास है। 12 अपॉन अगेन 4, दिस इज इक्वल टू 3 मोल। कितना हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। यस सर। चलिए, अब देखिए AIPMT 2015। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, कैसे करना है इसमें देखिए, ए ऑप्शन लिखिए एंड यू विल हैव 1.8 अपॉन 18 इंटू Na। ठीक है, 18 ग्राम में 18 अपॉन 18 इंटू Na। 18 मोल्स का मतलब 18 इंटू Na। 18 मॉलिक्यूल्स का मतलब ओनली 18। बताइए कौन बड़ा हो जाएगा? विच इज मैक्सिमम? ABCD, विच इज मैक्सिमम? अरे ये तो 1/10 आ जाएगा, दिस इज 1। कौन होगा सबसे बड़ा? ABCD। ओ, 4 आंसर मिल चुके, सॉरी माय बैड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर्स, maximum number of molecules of water.
18 ml का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 ml का मतलब होता है 1 ग्राम, है ना। वाटर का जो डेंसिटी होता है दैट इज 1 ग्राम पर ml। सो दिस इज गोइंग टू बी 18 ग्राम्स अपॉन 18 इंटू Na। ये कितना हो जाएगा 0.18 अपॉन 18 इंटू Na। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 0.00224 upon 22.4 into Na, and this is going to be 10 to the power minus 3 into Na। बताइए सबसे बड़ा कौन है इसमें, ABCD। सैफ करेक्ट, वेरी गुड। कितना टाइम नहीं लगना है, कितना टाइम नहीं लगना, जल्दी बताइए। ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दिस विल बी 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 0 पॉइंट समथिंग ही है। सबसे बड़ा ए। हनीफा मैमूना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस हनीफा। मैमूना व्हाट अबाउट यू? ठीक है, Yes. इतना टाइम नहीं लगाना, ठीक है। फिर से वही सवाल, सेम सवाल। अब यहाँ पे देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग, क्या करना है, लीस्ट से स्टार्ट कीजिए, सबसे छोटे वाले से। H2 से स्टार्ट कीजिए, कितना है 8 ग्राम ऑफ H2। H2 है, ध्यान रखिएगा, मोलर मास को ध्यान से देखिएगा, H2 का मोलर मास। ओके ओके, टर्न योर माइक ऑन, टेल मी 8 अपॉन हाउ मच, 8 अपॉन हाउ मच, 2. 8 अपॉन 2, ये हो गया 4, ठीक है। तो ये तो कट गया, 44 अपॉन 44, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 1 मोल हो जाएगा, दिस इज 4 into Na होगा, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। 48 ग्राम ऑफ O3, O3 में कितना होता है, 3 ऑक्सीजन, 16 3 48 अपॉन 48 ये भी था इंटू Na, तो ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. अरे ये O2 तो अपने आप में ही 32 हो गया, है ना। O2 तो अपने आप में कितना हो गया 32। एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सल्फर, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का भी 32। बचा क्या आपके पास, है ना। तो दिस विल बी व्हाट 64 अपॉन 64, ये भी 1 Na हो जाता। ऑल ऑफ दीज आर 1 मोल्स सिवाय H2 के, दिस इज हाउ मच, दिस इज 4 मोल्स। What has the maximum number of molecules among the following? 8 gram of H2। Clear है, सुनो प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. ये कीजिए आप लोग। The number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas। ट्राइएटॉमिक मतलब 3 एटम है उसमें, और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 0.1, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप लोग 6.022 नहीं ले लीजिएगा, 6.02 ही लीजिएगा जब 6.02 लेने को कहा है तो। ओके, रिमेंबर दीज थिंग्स। आंसर आना चाहिए। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, तुक्का मार दिया आपने, ऐसा लग रहा है तुक्का मार दिया, नहीं नहीं गलत है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स। चलिए बताइए, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस देयर विल बी हाउ मेनी एटम्स, ट्राइएटॉमिक, तो हाउ मेनी एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल हाउ मेनी एटम्स। अक्सा, आयरन, हनीफा, मैमुना, सैफ, बताइए कोई भी। 3. 3 atoms in each molecule, ठीक है। and how many molecules, 0.1 into 6.0.1 मोल था, मोल का मतलब 6.022 into 10 to the power 23, है ना। कितना हो जाएगा ये, 6 3 18 लिख सकते हैं, 18 पॉइंट समथिंग,
6 3 जा 18 पॉइंट समथिंग, है ना, और 18 पॉइंट कुछ कुछ होगा इंटू 0.1 तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हो गया, बी ऑप्शन होगा। कैलकुलेशन फास्ट करना है। Is this clear? Yes or no? Please tell me. Aksa, Alan, Hanifa, Mamuna, all of you tell me. Yes, sir. ये सवाल क्लियर है? हनीफा, मैमुना, what about you girls? Yes. नेक्स्ट देखिए फिर से भाई, किसको पकड़ेंगे यहाँ पे? देखिए जब सेम है ना तब तो आपको देखने की जरूरत नहीं, जिसका सबसे कम है उसी में टिक कर दीजिए। Which is having the least atomic mass? Atomic mass सबसे कम किसका है? Lithium. आंसर क्या? हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। फटाक से, कुछ नहीं। क्यों? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तो सेम है तो कांस्टेंट हो गया ये ना, उसको तो देखना ही नहीं है अब सिर्फ खा के ही चलेगा। ऑल द प्ले इज फॉर मोलर मास, तो मोलर मास कम, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, तो मोलर मास कम कहाँ पे? लिथियम। क्लियर है सबको? ये सुनो प्लीज टेल मी। कितना सेकंड? 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट। इन नीट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइम आपको बचाना किसके लिए? बायो में टाइम नहीं बचाना है, बायो के लिए टाइम नहीं बचाना है, बायो में टाइम बचाना है। टाइम बचाना है आपको फिजिक्स के लिए। टाइम कौन लेगा? आपका फिजिक्स लेगा, है ना। तो हम लोग जो यहाँ पे टाइम बचा रहे हैं, किसके लिए टाइम बचा रहे हैं? फिजिक्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? आराम से समझिए। द मिनिमम मोलर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझिए। यू हैव CH3COOH। व्हाट इज दिस एसिड? कौन सा एसिड है ये? व्हाट इज दिस एसिड? मैमूना, हनीफा, टेल मी गाइस। Acid. क्या एसिड? हाँ, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH, वेरी गुड, दिस इज एसिटिक एसिड। Here we have 2 carbons. How many hydrogens do we have here? How many hydrogens do we have here? कितने हाइड्रोजन है? 3 और 1 4। एंड ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 2। ओके, नाउ if I take the minimum mole, this is not minimum molar ratio, no. यहाँ पे we have a common factor, that is 2. तो 2 को सबसे डिवाइड कर देंगे तो minimum molar ratio will be CH2O. This is the empirical formula, that is the minimum molar ratio, and this is the molecular formula that is telling you the actual number of atom present in the molecule. Empirical formula से क्या बताता है? The ratio, the minimum molar ratio of atoms in a molecule. जितना सिंपल से सिंपल टर्म्स में लिख सकते हैं उतना सिंपलेस्ट लिख दिया आपने। इन होल नंबर रेशियोज, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्म, एंड द एक्चुअल नंबर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज व्हाट? इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जनरली आप कैलकुलेट कीजिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मिलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में आपको मोलर मास वगैरह दिया रहता है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि अगर इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2। एम्पिरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 2 से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C1 था C2, H2 था H4, O is 1, O2, and n will be equal to the weight of molecular formula divided by the weight of empirical formula. For example, ये ले लीजिए, the empirical formula and molecular mass of a compound are CH2O. empirical formula दिया हुआ है आपको, और क्या दिया हुआ है आपको? You have been given the empirical formula and molecular mass. This is what? This is molecular mass, है ना। ये क्या molecular mass है? What will be the molecular formula of the compound? तो n निकाल लेना है आपको। What you have to calculate? n. n is equal to the weight of molecular formula, that is molecular mass 180 gram, divided by weight of empirical formula. Empirical formula will be 12 plus 2 plus 16. कितना हो जाएगा ये बताइए? 30 30 हो जाएगा? ये सुनो, 30 हो जाए, है ना। n will be equal to how much? 6, करेक्ट है? ये सुनो, अब देखिए CH2O into 6 क्या हो जाएगा? C 1 था, अब C कितना हो जाएगा? How many C will be present here? C 6, H
12. हाँ बस खत्म, थर्ड वाला ऑप्शन है ना, पूरा नहीं करना है। C6 में ही आपको मिल गया आंसर, C6 टिक कर दीजिए, खत्म। ओके, मतलब हालात बदल जा रहे हैं, जज्बात बदल जा रहे हैं, बोर्ड्स के बाद आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। इन बोर्ड्स यू हैव टू राइट एज मच एज यू कैन। तो यहाँ पे क्या करना है, एक ही मिल गया, उसके बाद टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, आई थिंक आप बोर्ड से भी सिमिलर पैटर्न है, आपके 18 सवाल MCQ आते हैं, तो उसमें भी पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ 1 2 मतलब एक भी कुछ मिल गया आपको, उसमें भी टिक कर देना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कैन यू सी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, उसी तरह से फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट कार्बन। कार्बन रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, the right option for the empirical formula of this compound is। इस सवालों को, इन सवालों को कैसे करना है, इस तरह के कई सवाल आ चुके हैं 2021 में, 2008 में, फिर 2 में, ठीक है। कैसे करना है इन सवालों को, सी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल what you are going to do is you will calculate, you have 78%, तो फर्ज कर लेते हैं you have 100 ग्राम ऑफ दी, you have 100 ग्राम ऑफ दी कंपाउंड। 78 ग्राम क्या हो गया उसमें, 78 ग्राम इज कार्बन, डिवाइड कर दीजिए मोलर मास ऑफ कार्बन से। We are calculating for carbon, so 78 upon carbon का molar mass 12. Okay. Now, what about hydrogen? Hydrogen कितना होता है? What is the mass of hydrogen present in that element? Tell me. 100 minus 78 कितना हो जाएगा? 100 minus 78. 100 minus 78 कितना 22. होगा? Very good. 22 divided by hydrogen कितना होता है? 1. ठीक है। Now, डिवाइड हो जाएगा 78 अपॉन 12, कितना आएगा आंसर? 6.5, और इससे कितना जाएगा 22। तो यहाँ पे आपने निकाला है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे आपने निकाला है, सॉरी ये तो आपने मोल्स ही निकाला है यहाँ तक, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद निकालेंगे हम लोग मोल्स का रेशियो कितना है। तो मोल का रेशियो के लिए जो स्मॉलेस्ट है उससे डिवाइड कर दीजिए, 6.5 डिवाइड बाई 6.5, 22 अपॉन 6.5, ये आ जाएगा आपके पास 1। 22 डिवाइड बाई 6.5 कितना हो जाएगा, दिस विल बी समवेयर इक्वल टू 3.38। अब उस लिहाज से बताइए विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। Which option is going to be correct? Empirical formula, empirical formula 1:3 हो गया ना, 1:3 किसमें है, 1 carbon and 3 hydrogen। Only option correct is D, only option correct is D। Next इसका बताइए आप, an organic compound contains hydrogen, carbon, hydrogen and oxygen, its elemental analysis gives 38.71% and hydrogen is 9.6%, the empirical formula of the compound would be, तो कार्बन के लिए 38.71 अपॉन 12, हाइड्रोजन के लिए 9.67 अपॉन 1, एंड देन यू हैव ऑक्सीजन। तो व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो। सो 100 माइनस 38.71 माइनस 9.67, 51.62 डिवाइड बाई 16। ओके, कैलकुलेट दीज वैल्यूज, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे। इसको 12 3 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, दिस विल बी 9.67, ये तो कंप्लीट लिख सकते हैं, 51 अपॉन 0.62, Hmm, 16 3 सब 48 ना, 48, हाँ, दिस विल बी 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, एटलीस्ट वी कैन सी व्हाट, कार्बन एंड ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो दिस विल बी 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 3 पॉइंट समथिंग, 9.67 डिवाइड बाई 3 पॉइंट समथिंग, एंड दिस विल बी 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 3 पॉइंट समथिंग, जो स्मॉलेस्ट है। आई डोंट नो वेदर कार्बन इज स्मॉलेस्ट और ऑक्सीजन इज स्मॉलेस्ट, 3 पॉइंट समथिंग ही है दोनों। So both of these will be approximately equal to 1. This will be approximately equal to, I will say, 9 6 है ना, तो 3 के approximately equal होगा ये,
and this will be approximately equal. This will be equal to 1. Now you have B और C में से कोई ऑप्शन होगा तो आपको शायद कैलकुलेट करना पड़ जाए. 3 point something 9 3s and 2s are. So this will be 3.2 के करीब कुछ आना चाहिए, है ना? 3.2 के करीब कुछ आना चाहिए. Yes. So I think C will be the answer. अगर आप करेक्ट पूरा कैलकुलेट करेंगे तो C will be the answer. है ना? सही है. C is the answer. ये 3.2 दिख रहा है ना आप लोगों को. 9.6 डिवाइड अगर करेंगे 3 से तो 3.2 होगा. 3.1 से करेंगे तो 3.2 से और कम हो जाएगा, है ना? एक सेकंड, ये आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. टेल मी गाइस, Aksa, Alan, Hanifa, Mamuna and Saif, can you understand the approximation while I am calculating these things? आ रहा है ना समझ में? Okay, fine, चलिए ठीक. Okay, तो 3.5 के ऊपर हो ही नहीं सकता है because here we have divided by 3 point something. 3 point अगर 3 ही रहता तो 3.2 है. If you have 3.1 तो और कम ही हो जाता. The answer will be 6 CH3O. Next ये कीजिए आप लोग. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. देखिए आंसर आ गया. यस सैफ, वेरी गुड, करेक्ट. You have carbon, hydrogen, nitrogen. Carbon में आपके पास 40/12, hydrogen will be 13.3/1, nitrogen will be 46.7 upon 14. So this will be approximately equal to 12 3 is 36. 36 में 4 बचेगा तो फिर you will have 3s again ना. 3.3 के करीब कुछ आएगा ये. This will be 13.3 and 46. So 14 3 से कितना होता है? 14 3 से will be 42. 42 के बाद how much you will be remaining? So this will be also 3 point कुछ कम ही आएगा ये.
46.7 भी है ना, तो 3 पॉइंट, ये भी 3.3 के करीब आना चाहिए। दिस इज आल्सो 3.3, तो 3.3 divided by 3.3 divided by 3.3 divided by 3.3, so this will be equal to 1, this will be equal to 3.3, almost 4 के करीब आएगा ये, and this will be equal to 1. So you have only one option, that is I think CH4N, C. ठीक है। Now एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इसको लास्ट करके फिर कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट? इट इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स एंड द रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, तो m1 into x1 plus m2 into x2 and so on, x1 plus x2 plus x3. m1 m2 m3 ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप, थर्ड आइसोटोप एंड सो ऑन. x1 x2 x3 x4, all of these terms are going to be the relative abundance of isotope 1 2 3 and so. ठीक है, m1 x1 plus m2 x2, अगर आपके पास 2 है, अगर 3 है तो m3 x3 divided by x1 plus x2 plus x3. प्लीज राइट दिस डाउन। एक सवाल आया बस 2007 में से, after that write this question. An element X has the following isotopic composition. The weighted average atomic mass of naturally occurring element X is closest to. यहाँ पे 3 दिया हुआ आपको, तो m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by x1 plus x2 plus x3 कर देना है आपको। x1 x2 क्या होगा? 90%, 8% and 2% मिला के 100 हो जाएगा। Try this, I am giving you 2 minutes. ऑप्शन देख लीजिए तो शायद आप लोग यहाँ पे कुछ, you can directly write the answer also. I think 2 minutes is more than enough. Yes, Hanifa, very good, correct. Waiting for others.
Sir, can you show the D option? डी ऑप्शन नहीं दिखा दिखा आपको? यहाँ देखिए उतना ज्यादा कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको। सी 90% ऑफ द टाइम आपको क्या मिल रहा है? 200% मिल रहा है। 200 एटॉमिक वेट मिल रहा है। 200। ओके, नाउ समटाइम्स यू आर गेटिंग, नेक्स्ट आपका क्या है? 199। तो 199 कितना मिल रहा है आपको? 8% वो भी। तो थोड़ा सा आपका ये जो एवरेज एटॉमिक वेट का मीटर है थोड़ा सा किधर जाएगा? इट विल शिफ्ट अ बिट टुवर्ड्स 199, लेकिन यू आर गेटिंग 2% ऑफ 202 atomic mass also. Then again this atomic weight is going to, average atomic weight is again going to shift rightwards. तो बराबर आपके पास किस में पहुंच जाएगा? This is going to be somewhere around 200. It will be a bit less than 200 you can say, or some accurately equal to 200. But again ना ही 199 की तरफ होगा ज्यादा, ना ही 202 की तरफ होगा ज्यादा। Why? Because 90% of the time क्या मिल रहा है आपको? 200 ही मिल रहा है। Okay, so the answer is going to be 200 AMU. Done? Yes or no, please tell me. I think जो लोग कैलकुलेट किए होंगे उनका आ रहा होगा 199.96। सैफ कितना आ रहा था आपका? Yes, sir. Same. है ना? which I have calculated. चलिए, so in today's class we have learned about average atomic mass, है ना? Then we have learned about empirical formula. We did questions also. See, empirical formula they have a very short theory, but जो questions आते हैं उसमें जो calculation होता है that is completely different. ये theory में कभी आ ही नहीं सकता। That you have to take each element, then whatever percentage has been given, divide by the molar mass, you will get the molar ratios, फिर उसमें से जो smallest है उससे divide कर दीजिए तो empirical formula मिल जाएगा आपको। So this can be only explained by doing questions. Okay, then we also learned about, ये basic हमारा सबसे बड़ा topic था आज का, that was the number of atoms, है ना? Number of atom, maximum number of atoms कहाँ पे होते हैं? जो that was purely based on the mole concept, grams में हो, number of particles में हो, or it has been given in terms of volume for a gas at STP. Then we also did some questions regarding the general concepts of chemistry regarding compound. Then we did a small conversion from Fahrenheit to Celsius scale, accuracy और precision के बारे में हमने देखा, and we also did a question on different SI units. Okay, so in the next class we are going to learn about, the concentration terms and stoichiometric calculation. These are going to be the main topics. Concentration terms and stoichiometric calculation. ठीक है? In these two topics we will